Hello everyone, I am B.S. Kwal. I welcome to you in your channel Learning India. Today is the topic is article. Article play a very important role. Article play a very important role in the ensuring that we speak in right and correct English. That we speak and write correct English. There are two kinds of articles, definite or indefinite. Definite and indefinite. Definite is the D and indefinite is the A and N. Where we use the D. हम दो का प्रयोग कहाँ करते हैं? आप आराम से इंटरेस्ट से सुन लीजिए. द इज द वेरी इंपॉर्टेंट. जहाँ नदी होती है, होली बुक्स होती है, न्यूज, ग्रुप, माउंटेन and superlative degree, we must be use the Ganga, the Ramayana, the news, the animals, the average, superlative degree, good, better, best. बहुत से स्टूडेंट को वो दिक्कत होती है कि सुपरलेटिव डिग्री क्या है? गुड, बेटर, बेस्ट. द बेस्ट. You are the best boy. You are the best boy. Now you should become in how to use A. How to use A. A is used sound of consonant. Sound of consonant. I have a book. You have a cat. She has a dog. You must use A. Use of N. Sound of vowels. जहाँ आपका vowel sound is coming that you use. It is. अब क्वेश्चन ये उठता है, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर ये आप तो H कॉन्सोनेंट है. H is the consonant. How did you use N? इसमें तो A आना चाहिए, बट इससे नहीं कॉन्सोनेंट. It is the sound must be vowels, स्वर. This is not our. This is our. This is not our. This is our. This is our. This is an ink pond. So if their sound coming consonant, if the sound coming consonant, you must be use A. Where the sound of vowels coming, vowel sound is coming, you must be use N. हमको साउंड से मतलब इससे नहीं कि यहाँ कॉन्सनेंट आ रहा है, यहाँ ये आ रहा है, इससे मतलब यू हैव टू क्लियर एंड इट इज हाफ एंड आवर दिस एस इज द कॉन्सनेंट. एच कॉन्सनेंट बट यू आर पुटिंग एन. यू आर पुटिंग एन. व्हाई? बिकॉज दिस साउंड कमिंग आवर. दिस ओ साउंड कमिंग आवर. दिस इज एन इंकिपन. दिस ऑलरेडी ओके. तो प्लीज यू मस्ट अंडरस्टैंड वेयर यू यूज ए एंड द. दिस इज द आर्टिकल. इफ यू don't know how to use this A and the, तो this is the lot of problem for you in speaking. जब भी आप किससे बोलते हैं आप प्यार से बोलिए. आपको इतना यूज A and D कहाँ करते हैं इसका यूज आपको प्रॉपर वो मालूम होना चाहिए. बिल्कुल A and D कहीं भी गलती नहीं होना चाहिए. स्टार्टिंग इफ यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, it doesn't matter. You are going to low sometimes up and down is doesn't matter. कोई बात नहीं. जब स्टार्टिंग में आपका प्रैक्टिस नहीं है, गलत हो जाता है, कोई उसमें दिक्कत नहीं है. तो प्लीज यू अंडरस्टैंड ये पहले आर्टिकल A and the. A and the. A and the is the definite. The is the definite. Indefinite is the A and the. This is the suppose they are coming also group. क्या आ रहा है? ग्रुप. ग्रुप. दिस इज अ ग्रुप. एक एनिमल नहीं, बहुत से एनिमल है. तो आपको क्या मिला? द एनिमल. द एनिमल. रिवर जहां नदी है, नेम ऑफ रिवर्स गंगा, जमुना, सरस्वती. यू पुट एल्वेज डी. यू प्लेस ऑलवेज डी. डोंट बी कंफ्यूज प्लीज. होली बुक्स जहां पवित्र किताबें है, जहां पर क्या है पवित्र किताब है, वहां आपको द लगाना है. पहाड़, माउंटेन, न्यूज और वेल इज द सुपरलेटिव डिग्री है. गुड, बेटर, बेस्ट, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल. तो वहां क्या आएगा? दी आएगा. द बेस्ट. क्या आएगा इसमें? द बेस्ट.
the best. You are a boy. You are a boy, not best. You are a best. You are a best. This is the totally wrong. This is the totally wrong. So you must be say you are the best boy. You are the best boy. तो मैं समझता हूँ आप लोगों को समझ में अच्छी जगह से ये कॉन्सेप्ट आ गया होगा। फिर आप इसको प्रैक्टिस ये करते हुए, इंग्लिश लैंग्वेज मैंने बहुत बात नहीं बताया, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपकी समझ में नहीं आएगा। जिन स्टूडेंट को आता है बहुत अच्छी वो बात है, आप लोगों को इसको प्रैक्टिस करते हुए व्हेन वी यूज ए एंड द, ए एंड द, ए एंड द, ए एंड एन बोथ आर indefinite article or this is the D is definite. Okay, understood, not understood? So please always you follow where is the constant sound is coming, you must be use A. Where is the constant sound coming, you must be use the A. When vowel sounding is coming, you must use the N. Many students telling H is the sir constant. No, it doesn't matter. Must be sound, must be vowels. हिंदी में स्वर कितने होते हैं आप लोगों को मालूम है? ओ आ ई उ ऊ ए आई ओ औ अंक. Vowels in English A E I O U. Rest of the vowels all are the consonant except of the A E I O. Then that all are the consonant. So please I am talking more and more use of A. Where the sound coming consonant, you must use A. When the sound of vowels, suppose this is the S. We always say this is not our, this is our, or this is the our. This is an ink point, ink, also E. Sound is E. Use of the Ganga, name of rivers, name of holy books, the news, and group, many animals, the animals, mountains, the Everest. So many mountains you put before the superlative degree. There are three types of degree: adjective, superlative degree. You must put the. You are the best. You are the good. You are the bad. Not you are the best. So please, I request to all of you. You must be hard work to learning English step by step. You don't feel shy, mistake, no problem. I have told many times so how many you are going to mistake automatically will be improve. जितना आप गलती करते जाएंगे उतना ही सुधार होगा, पर इतना भी आप गलती मत करेंगे जहाँ बहुत ही ज़्यादा गलती हो। तो यूज ऑफ ए एंड द, यूज ऑफ डू द डी, ये मैं आपको पहले भी वो पढ़ा चुका हूँ। M2 R2, यूज ऑफ was were, shall will, helping back, model, but everything you have learned already. And this is the portion of grammar, but also in speaking. Always you use main point in English language. I have told many times, you don't follow the lot of rules of grammar. Your focus is only speaking. You are the student, you are as a teacher, you are in the brilliant student, so you must speak always correct English. This is a way of learning step by step. Tense, how many tense? How many forms of the tense? Everything you must by step. The rule of English language is learning very few tips. Form of the verb, degree also, and this also articles very important. So please, I am going to more revision to you, and you look here. A article plays very important role. A article plays very important role in ensuring that we speak and write correct English. There are two types articles: definite and indefinite. Definite and indefinite. Indefinite is a and the and definite is the. Use of the
the name of river, the name of holy books, the name of news, groups, mountains, superlative degree, you must be used the. And use of a, where your sound, consonant sound is coming, you must be always say, I have book. B, T, this is a consonant sound. Use of N, sound of the vowels. It is half an hour. This is an ink pot. There are so many rules, but this is the main point for you. I think if you follow this every long, not very long, and do practice every day 2 hours, I have told many times, please, if you can speak, if you want to speak English fluently, all the rules you should be follow, not very long rule, very simple rules, simple sentence you have to use. I am repeat more, my motto, you must be learn every day 5 words, 5 sentence and 5 forms of the verb. You must be learn every day till 3 months. Every day. And you have to speak with your company every day. In this way, I think you will be able to speak English fluently. आपको कोई परेशानी है, कोई दिक्कत है, आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल वो लिखिए. बिल्कुल आपको लिखना है कि सर हमारे समझ में नहीं आया. आई हैव टॉल्ड मेनी टाइम्स. कमेंट आप करिए. जब तक आप कमेंट नहीं करेंगे तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा. प्लीज आई वुड रिक्वेस्ट यू मस्ट बी राइट कमेंट बॉक्स एंड I will be share my knowledge more and more to you. English language is funny language. I have said many times. If you do practice without any hesitation, I think you can speak fluently. Don't be shy. It does not matter you are going to so many mistakes. हमको किसी की गलती को नहीं देखना है और उस गलती को नहीं देखते हुए हमको प्रैक्टिस करना है. आपका एम है, आपका फोकस हमको इंग्लिश बोलना है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है. आपको प्रैक्टिस करना है दिन रात अपने परिवार में, आउटसाइड इनसाइड एवरीवेयर टिल 90 डेज. आपको हिंदी बहुत कम करना है. आई लव माई मदर टंग, but English is all over the world. They are using all over the world. So that's why you should be hard work for your learning speaking. Please keep on reading, keep on practicing, and every day you have to practice at least 2 hours. At least 2 hours in front of the mirror. There is no anybody. In this way, you can able to speaking no problem. Thank you very much. I welcome to all of you. You must be hard work for your future life.